Hi, this is Ankit Doshist. I just gave my LLB exam. This time, question paper was quite easier than the previous one. And sectional wise, if you go forward in English, was we were having one comprehension and couple of synonyms and antonyms were there. Second section was our mathematics. They were pretty easy, just more like easily doable. Third section, when we go to legal maxims, they were quite common from like previous year question paper. They were matching enough. And when we move forward, our next legal reasoning and other questions, they were also quite easy. Overall, I guess the cutoff going to be shoot this year compared to the last 2 years because of the same thing. Other people who have just talked who have given the examination, they have done pretty much well, and most likely cutoff will shoot this year. That's What do you believe cutoff according to you? for me. The cutoff should shoot to 240 plus or 245. It should be 240 to 240 plus. Yeah. Do you recall any questions from the exam? Yeah, I remember a couple of questions. Let's say, just example for latest, the proposed year for the girls' marriage was, so this time it was 21 years, but originally students just miscalculated and they did it 18 years. Just for the mere fact it was misunderstood due to, I think, the pace of the studying, they might have missed that word. So yeah, I believe so. So I was talking to one student and she was saying that there was only one question from English section. So is it so? See, if from English there was comprehension was there definitely, Okay. but if you look forward to other question, they were like more like asking synonyms of antonyms, Okay. and they were just not directly asking, but indirectly they were asking. So Okay. it's more like synonyms questions were there, and but it was different from apart from this what do you say, comprehension. So Okay. yeah, they were And what about the weightage from which sections maximum majority of the questions were sorry, asked? sorry. From which sections majority of the questions were asked? They were mixed up. I would say majority of them were from the legal and the constitution were there. Majority of the section they were making of them. And current affairs were pretty much, but as compared to last time, they were not as much we can expect. So yeah, constitution and legal were making the most of the paper this time. हेलो, मेरा नाम अनिकेत है और मैंने अभी ड्यू LLB का पेपर दिया है. सो अगर लेवल देखा जाए पेपर के बारे में तो आई वुड से इट्स अ मॉडरेट पेपर, ठीक है. और करंट अफेयर्स क्वेश्चन और लीगल क्वेश्चन ज़्यादा थे. मैथ्स एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब पिछले साल क्वेश्चंस आए थे बहुत सारे नहीं, बेसिकली 2 और 3 क्वेश्चंस आए थे. बट या इन शॉर्ट कहूँ तो मॉडरेट पेपर था और दैट्स इट. कट ऑफ कितना ज़्यादा? कट ऑफ लास्ट टाइम तो 218 गया था कट ऑफ. अब आई एक्सपेक्ट कि सेम ही जाएगा. मुझे कोई Same ही डिफरेंट नहीं जाएगा। लगेगा. हाँ, मुझे कोई डिफरेंट नहीं लग रहा. मतलब क्वेश्चन्स सबसे ज़्यादा कहाँ से आए? कौन सी सेक्शन से आए? क्वेश्चन सबसे ज़्यादा तो करंट में से ही थे. कारण में से ही हाँ, थे. लीगल थे Okay. बट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करंट में से थे. कोई आपको क्वेश्चंस आपको याद है? कोई किस तरह के क्वेश्चंस आप पूछे गए थे? क्वेश्चंस नेटो से थे ओके. और आपके अभी रिसेंट जो वॉर चल रही है, रशिया यूक्रेन वॉर, ओके. और क्या था, मैथ्स में क्वेश्चन थे. हाँ, रीजनिंग में क्वेश्चन थे, डायरेक्शन के क्वेश्चन थे, और आपके ओके फैमिली ब्लड रिलेशन जो आती है आपकी, ऐसे क्वेश्चंस थे. बस ये सब थे. मैंने अभी एग्ज़ाम दिया है ड्यू LLB का, जिसमें डिफ़िकल्टी लेवल ठीक था, मतलब लास्ट ईयर से ज़्यादा था अभी. और ना जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बहुत सारे थे उसमें. अभी जो करंट अफेयर्स हैं वो बहुत सारी थी, और जो मतलब लीगल का लेवल है वो भी अच्छा था. ओके. डू यू रिमेंबर एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन? आपको कुछ याद है कि किस तरह, मतलब कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको याद है? हाँ, कुछ रिगार्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, वो शेड्यूल्स एंड अमेंडमेंट्स, एंड मतलब जीके क्वेश्चंस बहुत सारे थे उसमें. जीके क्वेश्चन बहुत सारे थे. और सेक्शनल डिफिकल्टी लेवल मतलब आप बता सकते हो व्हिच वाज द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन एंड व्हिच वाज द मोस्ट इजीएस्ट? ओवरऑल मॉडरेट था. जिसने पढ़ा है उसके लिए मॉडरेट था, जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए बहुत टफ था. और सेक्शंस में सबसे इजी सेक्शन कौन सा था? कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है उसमें, ओवरऑल कोई डिफरेंट सेक्शन नहीं होता है उसमें. नहीं, लीगल करंट अफेयर्स होते हैं, मतलब इंग्लिश होते हैं. उस जो पेपर है उसमें कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है. वन Okay. क्वेश्चन करंट अफेयर का है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का, एक लीगल का है, एक साइंस का है, ऐसे. ओके. तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल वाज मॉडरेट. और कोई टेक्निकल ग्लिचेस था कि एग्जाम में? नो, नो, इट वाज स्मूथ. और आपको क्या लगता है कट ऑफ कितने जा सकते हैं? मे बी लास्ट ईयर से हाई देन लास्ट ईयर. अच्छा, इट विल गो हायर देन लास्ट ईयर. ओके. ओके, आपका नाम बताना. My name is Priyanka and the paper is moderate and the GK is easy and that legal section is difficult. Legal section was difficult. And why was it so? Because of all legal questions related to that judge related and other. And what about the other two sections? Other two section is easy. Easy. Do you remember any particular questions that were tricky in nature? No. So do you remember any questions from the paper?
सो आपको व्हाट विल बी द कट ऑफ, मतलब आपको क्या लगता है कट ऑफ कितना जाएगा? 230. 230. ओके, टेल मी योर नेम. My name is Zoya, and I just took the DU LLB 3-year exam. I would say that the exam was very concise and it was a pretty short, simple paper relatively from what all previous papers I had attempted. But this time it was very simple. I think I finished my paper in like 1 hour 20 minutes, but I had to stay in and sit there and wait. And what was the difficulty level, sectional and overall difficulty level? Overall, I think English is like very simple, very basic stuff. Then internationally, it was very general. Okay. It was a basic general paper, I feel. And what was the sectional difficulty level? What do you mean by sectional? Which difficulty? section was the easiest and which was the most difficult? It was all at the same level only. It was at Okay. par. For like every single thing was like very basic this time. Okay. Do you remember any particular questions that you attempted during the exam? Yeah, I mean, I did a lot of LR, logical reasoning, and I did a lot of GK, and then some legal reasoning, and then I think they were asking about when was what formed, all of these. Okay. Any expectation regarding the cutoff? But I really hope for the best, but like कितना जा सकते हैं? How do you think regarding the cutoff? I have no idea. Thank you so much. Thank you. My name is Vanshika Gupta. I'm preparing for DU LLB. Okay. So very easy. So पेपर आप हिंदी में ही बता सकते हो? हाँ, बहुत easy पेपर था. Okay. कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही और 250 प्लस कट जाएगी कम से ऑफ कट ऑफ जाएगी, 250 जाएगी. और ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या था? वेरी मीडियम था पेपर, कोई डिफिकल्ट नहीं था. सारे क्वेश्चंस अच्छे थे, कोई मुश्किल क्वेश्चन था ही नहीं. था ही नहीं. अच्छा. और बहुत मैथ्स नहीं थी और रीजनिंग बहुत रेयर आई थी. बस मैथ्स क्वेश्चन नहीं आए थे, बिल्कुल ही नहीं आए थे. और लीगल रीजनिंग कैसे थे? रीजनिंग बहुत इजी थी. ओके. ओके. क्रिटिकल तो आती नहीं क्या DU LLB में, बट Okay. हमारी और भी ज़्यादा इजी है. ओके. ओके. मतलब आपको डू यू रिमेंबर एनी पर्टिकुलर क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जाम? आपको क्या याद है किस तरह के क्वेश्चंस आए थे? जी जी. मेनली जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, हाई कोर्ट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस. हाई कोर्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे. और जीके से क्या क्वेश्चंस आए थे? जीके से वही प्रेसिडेंट जैसे अभी जो बने हैं उनके रिगार्डिंग. ओके. ओके. और मैथ्स मतलब रीजनिंग से किस ऐसा क्वेश्चन आए थे? जो रीजनिंग से प्रोपोर्शनल टाइप क्वेश्चंस होते हैं वही क्वेश्चंस आए थे. Okay, कुछ okay. भी ऐसा नहीं था कि बहुत टफ पेपर. वेटेज सबसे ज़्यादा किस तरह के क्वेश्चन आए थे? वेटेज सब्जेक्ट वाइज वेटेज किसका ज़्यादा क्वेश्चन इंग्लिश था? बहुत रेयर था, बस एक ही क्वेश्चन था इंग्लिश. इंग्लिश का एक ही क्वेश्चन था. एक ही क्वेश्चन था, Okay. पैसेज बेस. ओके. बाकी पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चंस. पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन. पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चंस थे. और बाकी सेक्शन में से कौन से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे? पॉलिटी एंड लीगल. लीगल. ओके. थैंक यू.